Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to discuss the exercise of chapter number 11, that is bioenergetics. So let's start. So dear students, question number 1 is, each question has 4 options and circle the correct answer. So first MCQ is, magnesium is an important nutrient in green plants as it is an essential component of. So alpha option is cell sap, beta option is protein, Charlie option is chlorophyll, and delta option is glucose. So obviously it is Charlie option, that is chlorophyll. MCQ number 2, it says, when a green plant performs photosynthesis at its maximum rate. जब भी कोई plant अपनी maximum photosynthesis कर रहा होगा तो what will happen? Option alpha is the rate of water loss is low. Beta option is the water content of the plant will be low. Charlie option is the energy content of the plant will be low. And the delta option is the energy content will be unaffected. So the correct answer for this question is beta option, that is the water content of the plant will be low. MCQ number 3, it says, during the dark reactions of photosynthesis, the main process which occurs is. So dark reaction में जो main process वो क्या होगा? Alpha option, release of oxygen. Beta option, energy absorption by chlorophyll. Charlie option, addition of hydrogen to carbon dioxide. And delta option is formation of ATP. तो dear students, आपको पता है कि dark reaction में होता क्या है? That is the reduction of carbon dioxide. तो carbon dioxide की reduction किसे कहते हैं? Addition of hydrogen. So it is obviously option C or Charlie option, that is addition of hydrogen to carbon dioxide. Now MCQ number 4, which statement about ATP is not true? ATP हमने डिटेल से पढ़ा, उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है? It is used as an energy currency by all cells. Alpha option. So it is correct. हमने जो correct नहीं है वो ढूंढनी है. Beta option. It is formed only under aerobic conditions. Now हमने पढ़ा था कि ये anaerobic conditions में भी बनती है. अलबत्ता उसमें थोड़ी कम बनती है लेकिन बनती ज़रूर है. So Charlie option is some ATP is used to derive the synthesis of storage compounds. Yes, it is true. And delta option is it provides the energy for many different biochemical reactions. It is also true. So alpha option is true, Charlie option is true, delta option is true. Only which is not true about ATP is the beta option, that it is formed only during aerobic respiration or aerobic conditions. Now MCQ number 5, it says glycolysis produces no ATP. Alpha option, no. Beta option, it is same as fermentation, no. Charlie option takes place in the mitochondria, no, it takes place in the cytoplasm. We are left with only last option, delta option, reduces 2 molecules of NAD for every glucose molecule processed. Yes, that is the answer. So delta option is the answer for MCQ number 5. Now MCQ number 6, it says the citric acid cycle, alpha option, takes place in the mitochondria. Beta option, reduces 2 molecules of NAD for every glucose molecule processed. No, we are talking about the citric acid cycle or the Krebs cycle. Charlie option is the same thing as fermentation. And delta option has no connection with the respiratory chain. So it is a part of respiratory chain, that is citric acid cycle or Krebs cycle. So the only answer is left, which is correct, that is alpha option, that says the citric acid cycle takes place in the mitochondrion. Now MCQ number 7, it says which statement about the chemiosmotic mechanism is not true? तो chemiosmosis डिटेल से समझाया एक पूरे लेक्चर में, तो उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? Alpha option, protons return through the membrane by the way of channel protein. Yes, it is true. Beta option, protons are pumped across a membrane. Yes, it is also true. Charlie option, proton pumping is associated with the respiratory chain. तो chemiosmosis ये प्लांट्स में जो है हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और उसमें जो लाइट रिएक्शंस के दौरान ऐसा चल रहा है, जबकि रेस्पिरेशन वो एक अलग से मैकेनिज्म है, सो इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड. और डेल्टा ऑप्शन इज द मेम्ब्रेन इन द क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया उसमें जो जिस मेम्ब्रेन का जिक्र है इज़ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट the chemiosmosis.
सो केमियोस्मोसिस में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। सो यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जिक्र है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में तो रेस्पिरेटरी चेन होती है, क्लियर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी or delta option. Now, MCQ number 8, which statement about oxidative phosphorylation is not true? तो हमने oxidative phosphorylation पढ़ी थी, the formation of ATP in the presence of oxygen. So उसके वाले से कौन सी statement true नहीं है? Its functions can be served equally by fermentation. No, fermentation is something else. Beta option is in eukaryotes, it takes place in mitochondria. Yes. Charlie option, it is brought about by the chemiosmotic mechanism. Delta option is it is the formation of ATP during operation of the respiratory chain. So that is also true. So only option is left, that is its functions can be served equally well by fermentation. तो fermentation तो anaerobic respiration है और उसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ द यहाँ पर यही आंसर है इसका, ये इसके हवाले से ट्रू नहीं है, क्लियर। एल्फ ऑप्शन इज द आंसर। नाउ MCQ number 9, बिफोर पायरुवेट एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल और द क्रेब्स साइकिल, it is decarboxylated, oxidized and combined with coenzyme A forming acetyl-CoA, carbon dioxide and one molecule of, yes, alpha option NADH, beta option FADH2, Charlie option ATP and delta option ADP. So the correct answer is alpha option, that is NADH, nicotinamide adenine dinucleotide. Number 10, in the first step of citric acid cycle, the acetyl-CoA reacts with the oxaloacetate to form, yes, so 6 carbon compound बनता है. Alpha option pyruvate, beta option citrate, Charlie option is NADH and delta option is ATP. The correct answer is citrate. Now the last MCQ. When deprived of oxygen, yeast cells obtain energy by fermentation, producing carbon dioxide, ATP and, yes, so पढ़ा था हमने alcoholic fermentation में. So alpha option is acetyl-CoA, beta option is ethyl alcohol and Charlie option is lactate and delta option is pyruvate. तो जी dear students, तो जब ये yeast ox से वो करते हैं fermentation, तो उसमें क्या क्या बनता है? ATP and carbon dioxide and ethyl alcohol. So the answer is ethyl alcohol. Question number 2, write whether the statement is true or false and write the correct statement if it is false. So first statement is hydroponics are the plants grown in water culture. Yes, it is true. ये हमने chapter number 1 में पढ़ा था. Statement number 2, calcium is an essential element for chlorophyll formation. That is false. So chlorophyll formation के लिए magnesium और नाइट्रोजन तो हो सकते हैं, कैल्शियम नहीं, क्लियर। सो मैग्नीशियम उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एंड एज सेंट्रल मेटल एटम एंड नाइट्रोजन एज वेल बिकॉज इट फॉर्म्स द पायरोल रिंग्स. Number 3, the chlorosis means yellowing of leaves due to the deficiency of certain essential elements of plant nutrition. Yes, it is true. Now, short questions. Question number 3. The first part is list 4 features of the leaf which show that it is able to carry out photosynthesis effectively. So it increases the surface area for absorption. Number 1, due to presence of stomata, gaseous exchange is better. Number 3, water is reached by xylem over here. And number 4, all mesophyll cells contain chlorophyll. Clear? Number 2, summarize the role of water in photosynthesis. So dear students, water is the major reactant of or the raw material for photosynthesis. So without water there would be no photosynthesis. क्योंकि वाटर होगा तो फोटोलाइसिस होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आके लाइट रिएक्शन है वो आगे मूव ऑन होगा. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैप को फिल करेंगे इन द फर्स्ट द फोटो सिस्टम 2. एंड नंबर 3, व्हाट आर T.W. एंगलमैन एंड मेल्विन केल्विन फेमस फॉर. तो T.W. एंगलमैन आपको याद होगा, ये फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वो प्रोड्यूस किया था स्पायरोगारा के ऊपर. और मेल्विन केल्विन इट इज़ फेमस फॉर द डार्क रिएक्शंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो डियर स्टूडेंट्स, डिटेल से समझाया गया था आपको. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर अ क्लोरोफिल इंडिकेट्स द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट
while action spectrum shows the effectiveness of different wavelengths of lights in photosynthesis. Now, number 5, what is the role of accessory pigments in light absorption? So, dear students, आपको पता है कि जो accessory pigments हैं वो wavelengths जिनको मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब ना कर सकती हो, सो केराटिनॉइड्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल पास ऑन टू क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल बी विल पास ऑन टू द क्लोरोफिल ए to for effective photosynthesis. Question number 6. When and why there is no net exchange of carbon dioxide and oxygen between the leaves and atmosphere? तो याद होगा आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था, कंपनसेशन पॉइंट याद होगा आपको. सो एट द डॉन एंड डस्क, सूरज के तुलू होने के वक्त और सूरज के गुरूब होने के वक्त जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, सो उस वक्त रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ये सिर्फ इतनी होगी कि वो इस्तेमाल हो सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन बनेगी दैट विल बी ओनली सफिशिएंट फॉर द रेस्पिरेशन. सो इस दौरान एट डॉन एंड डस्क देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर. So that is compensation point. And question number 7, what is the net production of ATP during glycolysis? So net production पूछी गई है, तो net production 2 ATP, क्योंकि 2 तो इस्तेमाल हो गए थे, वो पे बैक हुए, और 2 टोटल 4 बने थे, 2 इस्तेमाल हुए थे हमारे प्रेपरेटरी फेज में, तो नेट हमें कितना फ़ायदा हुआ 2 का, 2 ATP. What is the main difference between photophosphorylation and oxidative phosphorylation? मेन डिफरेंस पूछा गया है. फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसमें कि जो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान. सो फोटोफॉस्फोरिलेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाइल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसिंथेसिस में होती है आमतौर पर और ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होती है दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन द क्लोरोप्लास्ट. What is the location of electron transport chain and chemiosmosis in photosynthesis and in cellular respiration? तो electron transport chain in chemiosmosis and in photosynthesis कहाँ पर होती है dear students? In the thylakoid membrane, inner membrane of the thylakoid membrane, ठीक है. जो thylakoid और thylakoid कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट में. और सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है. नंबर 10, हाउ डिड द एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड द मेटाबॉलिक पाथवे? तो मेटाबॉलिक पाथवे को किस तरह से उसने इफेक्ट किया? सो विद द स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर आना शुरू हुई. ऑक्सीजन केम इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट इनिशिएटेड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, why are the keratinoids usually not obvious in the leaves? They can be seen in the leaves before the leaf fall. Why? कि जो आम तौर पर पत्तों में हमें के जो accessory pigments जो केराटिनॉइड्स हैं वो हमें ज़्यादा नज़र क्यों नहीं आती? So keratinoids absorb less colors and their colors are masked by dark green color of the chlorophyll. So they are not obvious in the leaves. Before leaf fall, there is loss of chlorophyll, so keratinoids become obvious. Clear? और now the last question, how is the formation of vitamin A linked with eating of carrot? तो हम कहते हैं ना कि गाजर खाओ तो विटामिन ए जो है उससे आएगा. So carrots contain carotenoids and vitamin A is involved in the supply of carotenoids to the sensory cells of retina of the eye, without which they cannot function. आपको पता है कि जो रेटिना है उसके आई का उस विटामिन ए के बगैर काम नहीं कर सकता. आपने पढ़ा था, it leads to the फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स जो कि चाहिए होती हैं डार्क में, अंधेरे में ख़ास तौर पर, तो नहीं होगा तो उससे में नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो क्या होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, न्यूट्रिशन. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.